झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामेंद्र जी महतो, मेरे मित्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के कुलपति प्रोफेसर केशव राव, अन्य गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर विराजमान है, मंच के नीचे जो गणमान्य व्यक्ति विराजमान है, एडवोकेट जनरल साहब, प्रोफेसर लक्ष्मणनाथ सर, and all other friends, other dignitaries and dear student friends, a very good afternoon to all of you. भोजन के उपरांत का जो सत्र होता है वो थोड़ा सा कठिन सा होता है। मुझे एक वाकया याद आया कि हर शिक्षक को मदर के बराबर का दर्जा दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है। टीचर इज इक्वेटेड विथ मदर, एज मदर नर्चर्स, माँ जैसे अपने बच्चे को गाइड करती है, पालन पोषण करती है, बढ़ाती है, वैसे टीचर का भी रोल होता है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने का, बढ़ाने का। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड मदर। मदर कैन मेक स्लीप अ चाइल्ड ओनली वन, whereas teacher can make 100 of childs make sleep 100 of childs at one time. I hope I won't perform that duty since I have to speak in a post-lunch session. इनॉग्रल के बाद से प्रोफेसर लक्ष्मणनाथ सर ने जो शुरुआत की, तब से तो अब तक जितने भी वक्ता आए हैं उन्होंने मेरा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मेरे पास ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए बचा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बचा खुचा है वो मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की। 150 साल पहले ये भी डायसी ने कहा था, जिसका रेफरेंस प्रोफेसर शिव कुमार सर ने भी दिया, नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। अकॉर्डिंग टू हिम, फेडरलिज्म की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फेडरलिज्म की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक एज पर डायसी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ limited executive and legislative powers as well as judicial authority between the states and the center. संघ राज्य का मूल ढांचा जो है वो इसी मूल तत्व के ऊपर आधारित है कि संविधान के द्वारा संघ और राज्य इनमें जो अधिकार है, जो पावर्स है, उसका बंटवारा हो। पर्टिकुलरली लॉ मेकिंग पावर, कानून बनाने का जो अधिकार है उसका बंटवारा हो संविधान के द्वारा। वो फेडरलिज्म का, वो संघ राज्य का मूलभूत तत्व है, मूलभूत ढांचा है। यदि हम भारतीय संविधान की ओर नजर डालें तो उसमें कहीं भी संघ करके ये उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 1 of the Indian Constitution, it says India, that is Bharat, shall be union of states. ये राज्य का एक समूह है। Nowhere in the Constitution it is mentioned, संविधान में कहीं पर भी ये लिखित नहीं है कि ये संघ राज्य है करके। उसके बावजूद भी हम भारतीय संविधान का यदि परीक्षण करें तो उसमें जो संघ राज्य के मूल तत्व है, जैसे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हो, लिखित संविधान हो, राज्य और संघ, राज्य और केंद्र, इनमें अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो या इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ये सब चीजें हैं। कई सारे ज्यूरिस्ट ने, कई सारे न्याय प्रविष्टों ने ये कहा है कि क्या इंडियन सिस्टम ये फेडरल है। कुछ लोगों ने इसको संघ की तुलना की, कुछ ने इसे क्वासाई फेडरल कहा। लेकिन भारतीय इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 1956 में स्पेशल रेफरेंस केस में ये कहा, एंड आई कोट, although there has been a considerable controversy whether India is or is not a federation, and although some writers have called it quasi-federal, it would seem that essentially the Indian Constitution is a federal one. Reason is that because federalism postulates the existence side by side
within the framework of a single state, of a general or central government, and a number of regional governments with vertical divisions of functions, those of a general nature, that is, common interest to the people of the state as well as the whole being of the country as. इस तरीके से हम देखा जाए, पहले के वक्ताओं ने भी इसका जैसे उल्लेख किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, उसमें से हमने कुछ तत्व लिए हैं फेडरलिज्म के, लेकिन उसके बावजूद भी उससे थोड़ा हम दूर भी हटे हैं. The first and foremost problem with Indian federalism is the process of formation. जिस तरीके से हमारा राष्ट्र बना है, इंडियन फेडरलिज्म बना है, तो उसकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में थोड़े से प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कतें हैं. Because federalism is the output of a treaty or an agreement among the units for common goals, whereas Indian federalism was not created by treaty or agreement. On the contrary, it was formed by merging the areas in India not by their will but through agreement or treaty on common grounds. Despite the vastness of its territory and the diversity of its population, the Indian Constituent Assembly adopted a constitution that emphasized the territorial integrity of India, Indian states, and established a powerful center, a strong center की बात हम जो कहते हैं, जिसका उल्लेख पहले भी हुआ है कि it is to be a strong center because of the political situation then existed, जो राजनीतिक परिस्थितियां उस वक्त मौजूद थी आज़ादी के समय, उस वजह से स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़्यादा जरूरत पड़ी. और इस वजह से जो संघ राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान में आई है, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर, और उसको कहना चाहिए कि नहीं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वीक स्टेट्स, थोड़े कमजोर राज्य, क्योंकि ज़्यादा पावर जो है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 248, रेसिड्यूरी पावर, अदरवाइज इन अ फेडरल स्टेट, इन अ फेडरल कंट्री लाइक यूएस, residuary powers are vested in the hands of the state. Whereas in India, residuary powers under Article 248, these are vested in the hands of the Parliament, in the hands of the center as. The union which has been used, the term which has been used, because that time हम लोगों को जैसे ज्ञात है कि उस पीरियड में आज़ादी के दौरान कांग्रेस पार्टी ऐसी एक पार्टी थी, एक ही पार्टी थी वैसे देखा जाए तो, और उनकी जो फिलॉसफी थी, पार्टी की जो फिलॉसफी थी, वो संविधान में ज़्यादा हद तक रिफ्लेक्ट हुई. और इसी वजह से जो संघ राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान में जो आई, वो कांग्रेस पॉलिसी जो थी, कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के थ्रू या द्वारा आई है. द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर B.R. Ambedkar, also categorically mentioned in the debate, during the debate of the Constituent Assembly, that the drafting committee wanted to make it clear that, and I quote, India was to be a federation. The federation was not the result of an agreement by the states to join a federation, and that the federation not being the result of agreement. जैसे पहले कहा कि सही फेडरल स्टेट जो होता है वो एग्रीमेंट या ट्रीटी का प्रोडक्ट होता है, जो इंडिया में नहीं हुआ. बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द मर्जिंग स्टेट, फेडरलिज्म वाज अडॉप्टेड एज अ बेटर ऑप्शन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई विल स्किप फ्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम. मच हैज बीन रिटन, बहुत सारा कुछ लिखा गया है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में. We now examine the Indian judiciary and the need to strengthen the federal nature of our judiciary also. The Supreme Court of India has held that the federalist nature of our country is part and parcel of our basic structure. हमारे एक सम्मानीय पूर्व सदस्य जी ने कहा था कि बॉम्बे जजमेंट का उल्लेख नहीं हुआ है.
हम सभी को याद है आर्टिकल 356 का जो कुछ इस्तेमाल या गैर इस्तेमाल हुआ, यूज और मिसयूज और अब्यूज ऑफ पावर्स provided under Article 356 vis-a-vis the imposition of precedent rule, and ultimately it was in S.R. Bommai in the year 1994, wherein even the Indian Supreme Court has pointed out the federalism as one of the basic feature of the Constitution. The majority judgment of Justices P.B. Sawant and Kuldeep Singh squarely grabs the core analytical issue posed by pattern of federalism and recognized Indian democracy's multi-party character. The court opined, and I quote, under our political and electoral system, political parties may operate at the state and national level or exclusively at the state level. There may be different political parties in different states and at the national level. Consequently, situation may arise, as indeed they have, when the political parties in power in various states and at the center may be different, as we witness now. There were several such things which have been observed by the Supreme Court in Bommai. As we know, however, that the Bommai judgment marked a sea change in the judicial interpretation of Article 356. उसके पहले जो राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था, जिसमें जस्टिस भगवती ने जो जजमेंट दिया था कि वी डू नॉट वांट टू अ पॉलिटिकल थिकेट, a doctrine of political question was invoked by the Supreme Court in Rajasthan versus Union of India, when the precedent rule was imposed under Article 356 on the ground that the state machinery cannot be carried out in accordance with the Constitution as mandated. Hence, the precedent rule was imposed, wherein in Bommai, federalism was held as one of the basic feature. Federalism was held as one of the basic structure as. Wherein after Rajasthan, even the judicial decision and discretion which has been used in A.K. Rai versus Union of India, wherein the doctrine of political question was doubted whether in India really there is a doctrine of political question which exists. As I said that because of the paucity of time, I'm just running through the judicial decisions. However, a more favorable reading of state rights is not confined to few areas. For instance, the precedent rule position, which also includes the federalism as a part of basic doctrine, which places federalism beyond the purview of constitutional amendment. And in recent decades, also disputes on the distribution of legislative powers between the union and states. In relation to President's rule, the power of the President of India to take over the administration of state in case of breakdown of constitutional machinery has been persistently analyzed and referred by the Supreme Court. Since the judgment was delivered in relation to the presidential power under Article 356, which has been rather, I would say, reinterpreted. Till then, till Bommai, the word otherwise, which is there under Article 356, was used or was taken recourse. Till then, the report of the governor that there is a failure of constitutional machinery in the state was not mandatory. Still, I remember it was in Tamil Nadu in 1991, possibly, when Mr. Karunanidhi was the chief minister and Mr. Surajit Singh Barnala was the governor. Then the central government wanted to impose the precedent rule and thereby asked Mr. Surajit Singh Barnala to submit the report to the president that there is a failure of constitutional machinery in the state. The governor had refused to submit the report to the president that there is a failure of constitutional machinery in the state. In absence of the report of the governor, the Karunanidhi government was dismissed and precedent rule was imposed. So the word otherwise is very much there even now at this moment in Article 356. However, by virtue of
judicial interpretation in Bombay, the word otherwise is not read. Though it is there, it is not being read. Now the report of the governor has been made as mandatory as such. There is a signal that I shall conclude. There are rather various other things, various other decisions which we could refer to. So, in nutshell, I would say that yes, sir. Just a minute. I request you kindly conclude. Yeah. I will conclude. When we talk about federalism, what I feel that we shall rise above the political thickets. ये जो संघ और राज्य के बीच में जो टकराव मनमुटाव होते हैं, इसके ऊपर जब तक हम उठते नहीं, हम मतलब सरकारें जब तक उठती नहीं, पॉलिटिकल ग्लासेस के बगैर जो ढांचा संविधान ने दिया है वो हम फॉलो करते नहीं, तब तक हम आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं. क्या सही में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? किसी ने तो भी कहा कि इसका तो रिवर्स भी हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया. तो ये कब होगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रियल कोऑपरेटिव कब बनेगा? तभी बनेगा जब तक हम पॉलिटिकल चीजों के परे उठते नहीं, जाते नहीं, और उस तरीके से जो संविधान ने दिया है, जो जरूरी है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो इसेंशियल है, तब तक हम रियल मायने में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अचीव नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. If anyone has a question, please raise your hand. Good afternoon, sir. This is Ananya from NUSR Ranchi. So I want to ask that when we take the inadequacies which still prevail in the federal structure of India in consideration, how do you think that judiciary can help in formatting its future course? See, as I said, judiciary is trying to do, I won't say doing completely, but trying to do its best possible within its own limits or limitations. Ultimate solution lies in the hands of the political leadership at the center as well as state. Either misuse or abuse of power under 356, as well as the misuse of power by the governor in other areas, reserving the bills for the assent of the president, or even lawmaking power. All these are things that's the reason in concluding what I've said, that unless we rise above the political ticket, political boundaries, till then it will not be possible. Whatever the inadequacies are there, those inadequacies only political leadership can overcome. It is not ultimately the judiciary. Judiciary will do only then when someone will approach. But what otherwise if someone doesn't approach?